Hello and welcome back, guys. Now we're going to be doing O level physics 5054 May June 2022 paper 1-1. ठीक है ना मतलब paper 1 और variant 1. So before that, I have to tell you a few things about the paper and our projects. ठीक है ना तो basically इस पेपर के अंदर होंगे 40 questions, 40 MCQs. Each MCQ will be 1 mark and the time given for this paper will be 1 hour. So approximately 1.5 minutes होंगे for each question for you to attempt. मतलब कोई क्वेश्चन आपके फॉर एग्जांपल 30 सेकंड्स ले लेता है लेकिन अगला क्वेश्चन 2 मिनट ले ले शायद. So you have to attempt the like easy questions first, the so that you have a question if you fall, right? तो आगे हम देखते हैं. और एक और चीज कि हमारे पास ना टॉपिकली सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स भी हैं. लाइक फॉर एग्जांपल जो काइनेमैटिक्स है एक वो है व्हाट यू कॉल टॉपिक. इट हैज 20 क्वेश्चंस पेपर 2 में, राइट? सो ईच क्वेश्चन विल हैव अ एक्सप्लेन्ड वीडियो, राइट? तो या लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. A length of copper wire is labeled 0.5 meters and diameters of 0.5 millimeters. Which instruments are most suitable to measure accurately the length and the diameter of the wire? So let's assume this is the wire. ये होगा उसकी length and this will be the diameter. उन्होंने पूछा हुआ है कौन कौन से instruments use होंगे to accurately measure the length and the diameter. So let's make it quick. Length के लिए of course meter rule use होगा. Meter rule is something that you can measure up to a meter with. फॉर एग्जाम्पल आपका स्केल हो गया जो 1 मीटर वाले स्केल नहीं होते. और आगे हमने डायमीटर का देखना है. डायमीटर होगा ये छोटे वाला हिस्सा. छोटे वाले हिस्से को हम ऑफ कोर्स मीटर रूल से नहीं मेजर कर सकते. दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल. आप अपना स्केल लें, कोई भी स्केल ले लें, राइट? और उसको एक वायर के नेक्स्ट रखते हैं. विल यू बी एबल टू measure the wire accurately? Of course not. So we will use a micrometer screw gauge. Micrometer screw gauge, as the name suggests, जैसे नेम आपको रिप्रेजेंट करता है, ये बहुत छोटी माइक्रो चीजों को मेजर करता है. आगे क्वेश्चन नंबर 2. A driver drives a car at uniform velocity along a road. The driver sees a hazard and applies the brakes. तो ड्राइवर ने पहले एक हैजर्ड देखा है और उसके बाद उसने ब्रेक्स अप्लाई किए. What is the car's motion as it moves through the thinking distance and as it moves through the braking distance? तो आप इसको मैं ऐसे कंसेप्चुलाइज करवाने की कोशिश करूंगा. आप में से काफी ज्यादा लोगों ने गाड़ी, बाइक या बाइसाइकिल तो चलाई होगी. और अगर आप आगे एक स्टॉप साइन देखते हो, पहले आप अपने दिमाग में प्रोसेस करते हो कि आपने रुकना है या नहीं रुकना. लाइक इफ यू आर फीलिंग अ बिट नॉटी, यू डोंट स्टॉप. लेकिन अगर नहीं, इफ यू आर अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, आप रुक जाते हो. ठीक है ना? तो पहले आपके दिमाग में आती है सोच कि आपने रुकना है. इट्स लाइक एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. आपने अगर अपना फोन उठाना है, पहले आपने सोचना है कि आपने अपना फोन उठाना है, फिर आपने अपना फोन उठाना है. दैट विल बी द थिंकिंग डिस्टेंस. सो द कार विल मूव यूनिफॉर्म velocity while the person in the car is thinking. आगे motion through the braking distance. Braking distance is the time where you brake the car. आपने थिंकिंग डिस्टेंस में सोच लिया जितना सोचना था कि अब मुझे गाड़ी रोक देनी चाहिए, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस में आपने गाड़ी रोकनी शुरू कर दी है और उसमें डिसेलरेशन होगा. सो सी विल बी द आंसर. दिस इज अ वेरी इजी आंसर एंड वेरी रिपीटेटिव आंसर. तो मैं कहता हूँ इसका आंसर याद ही कर लें. इफ द structure is something like this. The diagram represents the moon in its orbit around the earth. Which arrow represents the direction of the resultant force acting on the moon at the instant shown? तो मैंने ये काफी दफा बोला हुआ है. If an object is moving in a circular path like the moon, ये जो moon है circular path में जा रहा है, उसकी जो velocity होगी that will be in this direction, उसका resultant force will be in this direction. समझ आ गई? और रिजल्टेंट फोर्स से ऑपोजिट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो ये वेलोसिटी है. द वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल टू द टू द टू द पाथ, यू कैन से. ये आपको मैंने एक और वो दिखाया है, व्हाट यू कॉल इट, डायग्राम. ये गाड़ी है और एक ट्रैक के अराउंड रेस कर रही है. इसकी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगी दैट विल बी along the middle of the
path, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, पहले ये इस डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जाम्पल जब ये मून इधर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो शिफ्ट हो जाएगी एंड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, right? And due to the velocity changing at every single moment, that means there is an acceleration taking place. And when there is an acceleration, there must be a resultant force. And that resultant force is towards the center. So A will be our answer. Acha ji, 4. The mass m of an object is related to the weight W, mass m, weight W, and the gravitational field G. Which equation shows the relationship? ये आपको क्वेश्चन शायद थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा हो, बट दिस इन फैक्ट इज द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन वी हैव डन सो फार। सो आपको दिमाग में क्या इक्वेशन आती है राइट आफ्टर थिंकिंग एम जी एंड डब्ल्यू? दैट विल बी द इक्वेशन वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, राइट? और इन्होंने हमें एक एरे ऑफ ऑप्शंस दी हुई है which we have to derive in order to get this formula. हमने इस फॉर्मूला को निकालना है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे टू मेक द वेट द सब्जेक्ट। वेट को हमने एक साइड पे ले जाना है और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड पे ले जाना है, तो वी आर गोना जस्ट डू दैट इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। लेट्स डू ए। ए में हमारे पास एम इज इक्वल्स टू W into GM. So in order to make W the subject, we'll have to do W is equals to gravitational field strength, यहाँ multiply हो रही है, यहाँ जाके divide हो जाएगी, तो M divided by G. So this is clearly not the answer. It must be M into G, not divided by G. तो आगे देख लेते हैं। M is equals to W divided by G. M is equals to W divided by G. अगर हम G को उस साइड पे ले जाएं, तो the G will multiply with the M. दैट विल गिव अस W। अगर हम इसको फिर से रीअरेंज कर दें, ऑल्दो इट इज द राइट फॉर्मूला, अगर हम इसको फिर से रीअरेंज कर दें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट विल बी W इज इक्वल टू M into G, विच इज एग्जैक्टली what I told you the formula was, or exactly what you read. This is the formula that relates the weight, the gravitational field strength, and the mass. So these are the right answer. अभी मैं आपको एक चैलेंज देता हूं कि आप अगली दो इक्वेशंस को भी इसी तरीके से अरेंज करें, just so you get a feel of it. आगे क्वेश्चन नंबर 5। A plastic cube of density rho is compressed so that each of its side becomes one half of its original length. What is the new density of the material of the cube? अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्पंज। आपके घर में स्पंज होगा जिससे आप बर्तन धोते हैं, राइट? अगर आप उसको स्पंज के ऊपर फोर्स लगाएं ऑन ऑल साइड्स पे आप उस स्पंज के ऊपर फोर्स लगाएं, द sponge will eventually, it will get shorter, it will get smaller, right? But of course the mass of the sponge is not affected. तो mass effect नहीं हो रहा sponge का, क्योंकि mass तो सेम ही होगा sponge का, either it is compressed or not compressed. लेकिन जो चीज चेंज हो रही है that is the volume is changing of the sponge. जब वॉल्यूम कम होता है तब क्या होती है? डेंसिटी ज्यादा होती है। जब वॉल्यूम ज्यादा होती है डेंसिटी कम होती है। वी कैन सी दैट इन द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगी, जैसे जैसे वॉल्यूम ज्यादा होगा डेंसिटी कम होगी, राइट? तो अब हम आगे देखते हैं। आगे उन्होंने हमें दिया हुआ है ये, इन्होंने हमें वैल्यूज दी हुई है। इट इज कंप्रेस्ड वन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो एक क्यूब है और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है दैट इज L, एवरी साइड इज इक्वल टू L, राइट? तो अब हमने निकालना है इसकी डेंसिटी। अगर आप देखें, दिस क्यूब लुक्स एक्सपोनेंशियली स्मॉलर देन दिस क्यूब। मैंने भला क्या किया इस क्यूब के साथ? द ओनली थिंग विच आई हैव डन इज आई हैव मेड द साइड्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइड, राइट? आप देख ही रहे होंगे दिस इज हाफ, but since we have divided the sides by half, the volume has decreased by 1/8 of the original volume, right? तो हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम देख लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस वाज द ओरिजिनल
फॉर्मूला दैट वी वर गोना यूज, अब हम यूज कर लेते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू एल। ये ओरिजिनल हमारे पास वॉल्यूम था, न्यू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय टू इंटू एल डिवाइडेड बाय टू इंटू एल डिवाइडेड बाय टू, मतलब हाफ हो गया है लेंथ। तो दिस न्यू वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय एल क्यूब डिवाइडेड बाय एल क्यूब डिवाइडेड बाय 8। ठीक है ना? तो वी कैन सी द वॉल्यूम हैज डिक्रीज बाय 1/8, so the density will increase by how much? That will be 8 times, 8 times the density will increase. मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। Density is equals to mass divided by new volume, क्योंकि mass हमारा चेंज नहीं हो रहा, न्यू वॉल्यूम क्या होगी? L divided by 8, right? अगर हम 8 को ऊपर ले जाएं, that will be density is equals to 8 whole L divided by, I mean mass divided by L. So that will be our new density. So 8 times हमारी new density हो जाएगी. So what will be our answer? Our answer will be D. 6. 4 glass objects have square bases of equal area. Which object is the least stable? The, for the stability of an object, we have to look at two things. The surface area which is hitting the ground एंड द सेंटर ऑफ मास। जितना नीचे होगा सेंटर ऑफ मास, उतना ज्यादा उसका ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। आपने देखा होगा कि जो पिरामिड्स होते हैं, दोज आर एंशियंट बिल्डिंग्स, राइट? उन वो एंशियंट बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो अभी तक घिरी क्यों नहीं, वो टूटी क्यों नहीं? बिकॉज उनका जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज वेरी लो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द मास इज वेरी लो। और अगर आपने नई बिल्डिंग्स देखी होंगी तो हमेशा एक खतरा रहता है कि वो बिल्डिंग गिर जाएगी, बिकॉज उनका सेंटर ऑफ मास इतना नीचे नहीं होता। सो दैट इज वन पॉइंट। एंड द अदर पॉइंट इज दैट द सरफेस एरिया विच इज हिटिंग द ग्राउंड, इसका सरफेस एरिया इक्वल है, सबका सरफेस एरिया इक्वल है। सो द ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड इज द सेंटर ऑफ मास। और जो सेंटर ऑफ मास है सबसे नीचे किसका है? इसका बिल्कुल मिडिल में होगा, इसका भी बिल्कुल मिडिल में होगा, इसका ऊपर होगा और इसका नीचे होगा, क्योंकि इसके नीचे ज्यादा मैस है, इसके ऊपर ज्यादा मैस है, इन दोनों के इक्वल मैसेज है। सो बी विल बी आर आंसर बिकॉज उसका सेंटर ऑफ मास नीचे है। 7. द इनिशियल प्रेशर ऑफ वॉल्यूम V1 of a fixed mass of gas P1, the gas expands at a constant temperature until it has a volume V2 and a pressure P2. Which statement about the pressure and the volume of the gas is not correct? ए ए में हमने देखा है कि द प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन डिवाइडेड बाय एम क्यूब, दैट इज टोटली रॉन्ग। आप हमने प्रेशर निकालना है, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, राइट? फोर्स हम किस में लेते हैं? फोर्स इज न्यूटन और एरिया इज मीटर स्क्वायर। सो द प्रेशर इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, नॉट इन मीटर क्यूब। The pressure multiplied by volume is a constant. Actually, उन्होंने पूछा not correct, so A is our answer. So these three are correct. इनको पढ़ भी लें आप तो अच्छा है। A stone falls at terminal velocity in air. What is equal to the change in gravitational potential energy of the stone? What is equal to the gravitational? अच्छा, wait, let me get my charger. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8. A stone falls from terminal velocity in air.
What is equal to the change in gravitational potential energy of the stone? अच्छा जी, उन्होंने हमें पहले बता दिया है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द स्टोन इज फॉलिंग एट अ टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का क्या मतलब होता है कि उसको अपनी मैक्स वेलोसिटी रीच कर गया है, राइट? अपनी मैक्स वेलोसिटी वो ऑब्जेक्ट रीच कर चुका है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर गेनिंग वेलोसिटी और इट इज नो लॉन्गर एक्सेलरेटिंग। What is equal to the change in gravitational potential energy? As we know, energy can neither be created nor destroyed. और अगर हम कह देंगे it is being converted into nothing, that will be conceptually wrong. So that energy is being converted into something, and that something is equal to what? The thermal energy produced. Because अगर मैं आपको टर्मिनल मतलब आपको मैं कन्वेंशनल वे में बताऊं, आपने एस्ट्रॉइड तो देखे ही होंगे। एस्ट्रॉइड घेर रहे होते हैं और ये अर्थ होता है, राइट? As the asteroid enters the atmosphere of the Earth, the asteroids will start to burn up. Asteroids आपने देखे होंगे, they are very मतलब एक आग के भगोले जैसे दिखते हैं, राइट? It is very hot, symbolizes heat, right? तो that is in our conventional way, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Water in a river is used to turn a turbine as the water flows downstream. How is this type of power source described? तो हमने बताना है कि ये कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, टाइडल है, वगैरह वगैरह. So we have to tell them. This type of power source is described as a hydroelectric. And let me tell you why. It is because जो hydroelectric power रहता है ना, it is generated by harnessing the energy flow of falling water. जब पानी घिर रहा होता है ना, इस पानी के घिरने की वजह से हम एक एनर्जी इस पानी के घिरने की वजह से हम एक एनर्जी हार्नेस करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द हाइड्रो इलेक्ट्रिक। और ये टिपिकली लगा होता है रिवर्स में लगा होता है और डैम्स में लगा होता है, और नीचे लगा होता है एक टरबाइन, राइट? नीचे एक टरबाइन लगा होता है जिसको ये पानी रोटेट कर रहा होता है, और जब टरबाइन रोटेट होता है तब एक जनरेटर साथ लगा होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, एंड दिस इज अ रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। आगे देख लेते हैं। 10. A load is pulled by a rope attached to a motor. The resultant force exerted by the rope on the load is shown in the diagram. Resultant force दिखाया हुआ है, this is 12, this is 8, this is 4 and this is 10. In each diagram, the load moves in the direction of the force shown and takes 10 seconds to travel 1 meter. In which diagram does the motor work with the greatest power? अच्छा ये हमने बताना है कि पावर किस में है सबसे ज्यादा। First of all, we're going to use two formulas for this what do you call it, question. Formula 1 will be work done is equals to, what is work done equal to? Force into distance or displacement. Force into displacement in the direction of the force. Displacement. और दूसरा फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। समझ आ गई? पावर is equals to work done divided by time. First of all, we're going to calculate the work done. The work done will be calculated using force, which is 12 into 1, which is the displacement. That will be equal to 12. And for each, this will be 8, this will be 10, this will be 4. समझ आ गई? अब आगे हमने निकालना है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू द पावर विच वी हैव टू कैलकुलेट। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द पर्सन हु डजंट नो द क्वेश्चंस एट ऑल। तो आप यू कैन स्किप इट इफ यू नो इट, तो आप आगे भी जा सकते हो, बट आई एम स्टिल गोना डू इट। पावर इज इक्वल टू वर्क डन विच इज 12 1 विच इज 12। और अगर हम 8 डिवाइडेड बाय 1 करें दैट विल आल्सो बी 8, और अगर हम 10 divided by 1 करें that will also be 10, and so on and so forth. So what is the highest that we can see? That is gonna be 12, which is 8. So that is our answer for the first 10 questions. Question number 11. 1 second on a group of solar panels is 120 joules per meter square.
So what they are basically saying is that every meter square of that solar panel will produce 120 joules of energy. Matlab, for example, this is 1 meter. 1 meter by 1 meter of solar panels will generate 120 joules of energy. The group of solar panels, matlab there are multiple solar panels, convert 720 joules of light energy to 120 joules of useful electrical energy in 1 second. What is the total surface area of panels and what is the efficiency of the system? So what we have to find is the total surface area and the efficiency. The total surface area can be very easily be calculated because one solar panel one solar panel creates 120 joules per meter square, right? So how many solar panels will create 720 joules of energy? That will be calculated using 720 divided by 120, which will give us the answer, which is 6. 6 meter square of solar panels will be required to generate 720 joules of light energy. अभी आपने notice करना है, we are only talking about light energy which is received by the solar panels. We are not talking about the electrical energy. और जब ये light energy electrical energy में convert होगी, what will happen is there will be a loss in energy, right? Since you can see कि जो energy है that is going from 720 to 120. So how can we generate the efficiency? How can we calculate the efficiency? The efficiency will be calculated using the formula useful output to divide by total input multiplied by 100, of course. So useful output is 120, which is the useful electrical energy, divided by 720, which is the total. This will give us 0.1667. 0.1667 will be multiplied by 100, which will give us 16.67. 16.67 को अगर हम round off करें, we will get the answer 17. So seems like A is the right answer. आगे चलते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं, इसकी वर्किंग यहाँ. If you want a screenshot, here it is. Anyways, question number 12. A 1000 watt, 240 volt electrical device is switched on. How much energy does it use in 5 minutes? So we have voltage, we have power, and we have time. Which formula comes in your mind which relates like either of the quantities? We have voltage, we have power, and we have time. So in my mind, the power formula snaps in. Power का क्या formula है? Power is equals to energy divided by time. Power हमारे पास कितनी है? Power है हमारे पास 1000. Energy हमने निकाल ली है. इसको x लिख देते हैं. Divided by time हमारे पास कितना होगा? 5 minutes. But we will not write 5. We will write 5 into 300. I mean 5 into 60. Because 5 minutes है and every minute contains 60 seconds. तो यहाँ डिवाइड हो जाए, जहाँ जहाँ जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो we can easily calculate that. So 300,000 will be the answer because 300 into 1000 will be 300,000. Sorry. So yeah, that's the answer. 300,000 joules is the answer. आगे चलते हैं. Question number 13. A building has walls made from wood and steel. What describes the way in which the thermal energy is transferred through the walls? So basically what they are saying is the building is made of two materials. Building two materials से बना है because मतलब आपने घर देखे होंगे, घर are made of multiple what do you call it, materials. ठीक है ना? Describe in the way in which the thermal energy is transferred. First of all, we have to take into account that the thermal energy will be transferred using conduction. And one might ask what conduction is, right? Conduction होता है the heat transfer mainly through solids. ठीक है ना? जब आप एक solid को heat supply करोगे, what will happen is that the solid particles will heat up, right? And when the solid particles heat up, they will start to vibrate in their fixed positions. And when they vibrate in their fixed position,
they will transfer the kinetic energy to the neighboring particles. मतलब ये particle है, if this vibrates, this particle will vibrate because it is in neighboring like regions. So if that's out of the way, let's move on to the main question. उन्होंने बोला है कि what describes the way in which the thermal energy is transferred through the walls? First of all, conduction. Second of all, wood और steel में से conduction हो रही है. Wood से mainly vibration के through heat transfer होगी. But जो steel है, that is a very conductive material. आपने देखा होगा आपके जो घर के saucepans वगैरह बने होते हैं, that are made of steel. That is because जो steel होता है, that is a very good encapsulator of heat, right? तो मेनली जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी दैट विल बी थ्रू स्टील. ये हमारे पास एक आंसर आ गया, राइट. बट स्टील से कैसे होगी? स्टील से बोथ वाइब्रेशन एंड द फ्री electrons, both from the vibrator vibrations and the free electrons. So conduction through the wood by movement of molecules through the wood only. That is completely wrong. B. Conduction through the metal by both the vibration of particles and movement of electrons through the steel. That is correct, like I told you. Vibration and the free electrons. Conduction through the wood by... अच्छा इसको छोड़ ही दें. Like, it's a very straightforward answer. Anyways, question number 14. A liquid column in a liquid in glass thermometer is 2 meters, 2 centimeters long at 0 degrees Celsius. The column expands by 10 centimeters when heated to 100 degrees Celsius. Measure from T how long is the liquid column at 30 degrees. So first of all, हमने formula कौन सा use करना है? We're going to use this formula. इसको हम rearrange करके ये भी लिख सकते हैं T is equals to T divided by 100 is equals to this. But whatever you want to do, I don't really mind. Anyways, T is equals to हमारे पास 30 है, right? 30 is equals to L theta. L theta is the length we have to find out. L theta minus L naught. What is L naught? L naught is the length at 0 degrees Celsius, which is 2, divided by L 100, which is the length at 100 degrees Celsius. तो ये 12 हो जाएगा. Minus L naught, which is 2. Again, multiplied by, the whole will be multiplied by 100. So 30 divided by 100 is 0.3. 0.3 will be equal to L minus 2 divided by 10. 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट. तो हम कर लेते हैं 10 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी 3. 2 यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, दैट विल बी प्लस 2 विल बी इक्वल टू 5. 5 will be our answer. Very easy question. In many applications, a thermocouple is used to measure temperature instead of a liquid in glass thermometer. Which property of thermocouple is a major advantage? अच्छा जी, हमने निकाला है major advantage. So let's just go through the options so we can find that out. Its greater heat capacity. No, it has smaller temperature range. It is quite the opposite. It has a larger, what do you call it, temperature range. ठीक है ना? Mainly ranging from minus 200 degrees Celsius to 1500 degrees Celsius. Acha, it has a non-linear output that is not related. Its quicker response time, that is very true. ये बहुत responsive होता है, right? Because एक thermometer can either have a large range or be, or you can say be sensitive, right? If we don't mess with the length of the thermometer. So yeah, it has a very quick response time because it is very sensitive to temperature. समझ आ गई? Let's move on. Question number 16. A liquid in glass thermometer consists of a
Bulb containing a liquid which expands into a thin capillary tube. अच्छा एक liquid है which is expanding at x rate in volume which is equal to 10. I'm just doing this for the sake of an example. ठीक है ना? Just for comparison measures. This is by no means the real question. ठीक है ना? I'm just doing it for the comparison of two elements. The liquid in the thermometer is replaced by the same volume of a different liquid that expands more for the temperature rise. So the temperature rise at a certain temperature rise, the liquid is expanding more, but the volume is said to be the same. The volume जो हमारे पास जो जगह है उसके लिए that is same, but the expansion is way more. The length of the capillary tube remains the same. How does the new thermometer compares with the old thermometer? So it is expanding at 2x in volume, which is equal to 10. तो हमारे पास वॉल्यूम सेम है बट एक्सपेंशन हमारे पास डबल हो गई है दूसरे वाले में राइट एक्सपेंशन डबल हो गई है दैट मीन्स that the thermometer will be more responsive, it will be more sensitive. But when a thermometer is more sensitive in that particular thermometer and the capillary tube remains the same. आप गौर करें what am I saying? If the capillary tube size remains the same and the liquid, the new liquid is more expansive, what will happen is that the sensitivity will rise, but the range will fall. The sensitivity will rise, but the range will fall. And this is only because what is happening? The what do you call it? The liquid is different and the capillary tube is the same. ठीक है ना? So these are straightforward answer. Next question, very easy. Question number 17. What is the usual symbol and what is the unit for the heat capacity of an object? So we know this is the unit for the symbol for the heat capacity, and the unit can be easily calculated using the formula of the heat capacity, which is Q is equals to C into, heat capacity into change in temperature. तो अगर हमने heat capacity को वो बनाना हो, what do you call it, subject, so we'll just divide the change in temperature by the heat energy, right? What we just do that? Change. एक second बस. So this is how we will rearrange it. Q is heat energy, which is calculated in joules, and the change in temperature will be calculated in Celsius, which will be equal to heat capacity. And the clear cut answer is A. Question number 18. Which law describes the arrangement and the forces between the particles in a solid? The forces between the particles in a solid is first of all, the solid is very densely packed. And when the solid is densely packed, that means that the forces of attraction is strong between the particles. So it is strong. Arrangement of particles in a solid configuration stays regular. That is because अगर आपने देखा हो, for example, you have your phone, right? You have your phone. आपके फोन का अंदर fixed amount of matter है, which is not moving around like liquids. It is not moving around like fluids. Like for example, आपके पास एक jar of air है. अगर आप उस jar of air को pour कर दोगे या jar of gas को pour कर दोगे, it will change volumes. But if you do the same with a solid, it will not change anything.
So it has a regular configuration, it has a regular arrangement of particles that will make A the answer. Question number 19. So this is an easy question. A wave in the sea collides with a cliff. A crest of the wave hits the cliff every 6 seconds. The horizontal distance between the crest and the adjacent trough of the wave is 4.5 meters. What is the speed of the wave? First of all, we have to keep in mind a couple of things. They have given us two values. ठीक है ना? अब ये आप पे डिपेंड करता है आप उन वैल्यूज पे कैपिटलाइज कैसे करते हो. दिस इज द क्रेस्ट, दिस इज द ट्रफ. समझ आ गई? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द crest and the trough is equal to half a wavelength, right? अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, you can pretty much put it here and this will be equal to half a wavelength. अगर आपको ऐसे समझ आता है, but अगर आपको ऐसे भी समझ आता है, this is equal to half a wavelength. समझ आ गई? तो one half of a wavelength is equal to 4.5. What will be equal to one wavelength? If you multiply 2 into 4.5, that will be equal to 9. 9 meters is equal to one wavelength. अच्छा जी, एक हमारे पास वैल्यू आ गई वेवलेंथ की. Of course, we're going to apply the formula V is equals to F lambda. But for that, we will need the wavelength and the frequency. Now, if we talk about the frequency will be calculated using this time period. अब वो हमें क्या बोल रहे हैं? For example, this is a cliff and a wave is incoming. It is saying every crest hits the wave once every 6 seconds. This is a crest and this is a crest. And the distance between one crest and the other crest is what? One wavelength. समझ आ गई? The, the distance between one wavelength and the other is one wavelength. One crest and the other is one wavelength. So what can we do with this information? We can do 1 by time is equals to frequency. Frequency is equals to 1 by time, however you want to arrange it. Frequency is equals to 1 by time. F is equals to 1 by 6. Because that is how long it takes for one wave to pass. This is the time period for the one wave to pass. 1 divided by 6 will be equal to 0.1667. So we can apply the formula V is equals to F into lambda. Lambda is wavelength. V is equals to F, which is 0.1667 into 9. If we calculate this, what will we get? We will get 1.5. 1.5 meters per square is the answer. Meters per second, my bad. A sound refracts as it passes from air to water. Which quantity is changed? First of all, आपको याद होना चाहिए कि when the sound changes a medium, what will happen is that the sound will change at speed. The speed of the sound will change. And how will the speed of sound change? The speed of sound will increase when the mediums is changed between air and water. When the sound moves from air to water, the speed will increase. Speed will increase. समझ आ गई? And when the speed is affected, the wavelength is also affected. So B is the right answer. So these are the next 10 questions. Question 21. An object is viewed through a thin converging lens. The diagram shows the path of two rays from the top of the object to an eye. How does the image compare with the object? अच्छा जब भी ना आप converging lens लाओगे like near an object, what will happen is that the object will be seen magnified. ठीक है ना? क्योंकि जो converging lens होता है that concentrates all the light onto a smaller जगह. So the image will be magnified. Magnified slash larger. And we can also say that the image was virtual, upright,
वगैरह वगैरह. So where is the description? अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो, you can just go through your course books and surely you'll find an example related to this question. I'm sure of that. So yeah, larger, larger, larger. और उसके बाद virtual और upright है. Virtual का जिक्र नहीं हो रहा तो upright लिखा हुआ है and B is the right answer. अच्छा, 22. A ray of white light enters the prism as shown. Which row is correct? Wave properties observed. ठीक है ना. हमने पहले बताना है कि डिस्पर्जन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, या दोनों हो रहे हैं. और फिर हमने बताना है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेड लाइट कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लू लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्पर्जन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, दोनों हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डिस्पर्जन? Dispersion is the splitting of white light into the constituent colors. It is the splitting of white light into the constituent colors. And what is refraction? मतलब dispersion तो हो रही है हमारे पास. What is refraction? Refraction is, it is the bending of light when it changes medium. So it's either C or D. The answer is either C or D. And now we have to determine the frequency. अच्छा, frequency of red light will be smaller than the frequency of blue light, and the wavelength of red light will be larger than the frequency of blue. समझ आ गई? So we can simply write, sorry, frequency of red light is smaller than the frequency of blue light. Smaller. So D is the right answer. Which waves are not a part of the electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum में radio waves आती हैं, television signals, ultrasound बिल्कुल भी नहीं आती है, and ultraviolet आती है. So ultrasound is not a part of the electromagnetic spectrum. Acha, here comes an interesting question. A man standing between two tall buildings P and Q. He is 50 meters from P and 200 meters from Q. He sounds a horn. He hears the first echo from building P. मतलब लाइट यहां से जा गई है और वापस आ गई है, एंड आफ्टर दैट उसके एक सेकंड के बाद इधर से एको की आवाज आ रही है. मतलब यहां से लाइट गई है और यहां से वापस आ गई है उसके एक सेकंड के बाद. व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेटेड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन? अच्छा जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने यहां हॉर्न रखा हुआ है ना. जब आप यहां हॉर्न रखोगे तो हर डायरेक्शन में साउंड वेव्स जाएंगी, राइट? We can easily conclude that the sound wave will go in this direction as well as this direction, right? तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं. Sound wave goes in this direction, which is 50 meters, and it comes back in this direction, reflecting back into the person's ear, which will be a combined of 100 meters, because 50 meters यहां से यहां तक की है, 50 meters वापस आया है, which is 100 meters total. In the same time frame, सेम टाइम में यहां से यहां तक 100 मीटर्स ट्रैवल कर लिए साउंड ने. सॉरी फॉर दैट. यहां से यहां तक 100 मीटर्स ट्रैवल कर लिए साउंड ने. समझ आ गई? तो यहां तक हमें उसने डेटा दिया हुआ है. तो आगे हमने खुद करना है. आगे हमारे पास कितना रास्ता बचा है? आगे हमारे पास बचा है दिस रिमेनिंग 100 meters and this remaining 200 meters, which will be a combined of 300 meters, which will be covered in 1 second. So 300 meters by 1 second will be equal to 300 meters per second. I'll try to explain it to you one more time. So first of all, what he already has said in the question is that the sound travels from the horn to the building P and comes back, which will be 100 meters worth of travel. 100 मीटर उसने ट्रैवल कर लिया.
और उस सेम टाइम में 100 मीटर्स इसने हॉर्न से यहां तक ट्रैवल कर लिया, राइट? क्योंकि साउंड साइमल्टेनियसली हर डायरेक्शन में जा रही होती है। और तब उसने बोला है कि उसके 1 सेकंड बाद, मतलब यहां से यहां तक और वापस आने तक 1 सेकंड लगा है फॉर द पर्सन टू हियर द एको। तो हमने सिंपली क्या किया है, वी हैव डिवाइडेड द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, which has given us the value of the speed, which is 300 meters per second. ये ज्यादा लंबा हो गया है, चलो आगे चलते हैं। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन ईच ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। विच रो शोज वेयर साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट एंड विच रो शोज वेयर साउंड ट्रेवल्स द स्लोएस्ट। तो हमें पता है साउंड लाइक सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड्स में, उसके बाद गैसेस में। So fastest will be in solids and slowest will be in gas. So D is the straight away answer. What is one uses? What is one of the uses of ultrasound? It is used for cleaning jewelry. Straight away, that is the answer. इसको एक बार recheck कर लेते हैं. I might have done it wrong. State where the sound travels the fastest, which is the solid, and slowest gas. Yes, exactly. Again, 27. Which material is used for the core of an electromagnet? It is gonna be C. Very easy questions, yeah. These are 3 marks. 2. Yeah, 28. Two metal spheres are mounted on insulating stands. Sphere X initially uncharged and sphere Y is initially positively charged. So sphere Y is positively charged. इधर हम एक positive symbol बनाते हैं. It is neutral. What are the charges on X and on Y after the rod is placed on them? अच्छा, first of all, let's make two circles. दो सर्कल्स बना लेते हैं, एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम दो प्लस के साइन बना लेते हैं इधर, और दो माइनस के साइन बना लेते हैं, और यहाँ तीन, बल्कि यहाँ चार प्लस के साइन बना लेते हैं और दो माइनस के साइन बना लेते हैं। ठीक है ना? जब हम यहाँ एक रॉड रखेंगे इनके बीच में, व्हाट विल हैपन इज दैट द uneven charges will cause the, what do you call it, the negative charges to move here. तो एक नेगेटिव चार्ज हमारा इधर से मूव करके इधर चला जाएगा, which will make this sphere positive and this sphere positive as well. ठीक है ना? तो both of the spheres will be positive now. Positive and positive. I will recheck the answer, and if the answer is in any case wrong, I will not include it in the video. But that is my final answer. Which device involves the use of static electricity? That will be a photocopier. टोनर चिपकाने के लिए फोटोकॉपियर यूज करता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 30. An initially uncharged copper rod is placed in a uniform electric field. The rod is parallel to the electric field. Which diagram shows the charges induced on the rod? So the direction of the electric field is from the left to the right. So the positive charge will be on the right side. So this is incorrect and this is incorrect. It's either B or it is either C. अच्छा, बी में हमें नजर आ रहा है कि पॉजिटिव वाला तो है ऑन द राइट साइड, बट देयर इज नो नेगेटिव. So that automatically makes D the answer because it has positive on the right side and negative on the left side, and the electric field is in the direction of the positive charge, which is D. Question number 31. The diagram shows a simple electric circuit. Which row describes the charge on an electron and the direction of the flow through the resistor? So हमने direction बतानी है of the electrons and we have to tell the charge. So as we know, electrons are negatively charged particles. So it's either A or B, and the direction of electron flow will be always from the negative to the positive. मतलब in this direction. मतलब from Y to X जा रहा है. तो B will be our answer. Because Y से X is direction में होगा, right? So B will be our answer. When the flash on a camera is used, 1.5 coulombs flow for 0.3 seconds through the flash lamp. Average voltage across the flash lamp is 36 volts. What is 3600 volts? What is the electrical energy supplied to the flash lamp
And what is the flash lamp? And what is the average power supplied? The average power and the electrical energy. So first of all, we have to use the formula Q is equals to IT. ठीक है ना? Q हमारे पास आ जाएगा 1.5 is equals to I into T, which is 0.003. 1.5 divided by 0.003 will be equal to 500. 500 will be our current, 500 amperes will be our current. समझ आ गई? तो करंट हमारे पास आ गया, हम P इज इक्वल टू आई भी लगा सकते हैं, नहीं एक्चुअली हम नहीं लगा सकते। सोचो सोचो सोचो। एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी। Energy is equals to VIT. Yes, we can apply that. Energy is equals to VIT. Energy is equals to 3600 into VI in which is 500 into T, which is 0.003. So this will be our equation. 5400 हो जाएगा हमारे पास एनर्जी। पावर निकालनी है हमने, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी हमारे पास 5400 आ गई और इसको हम डिवाइड करते हैं 0.33 वगैरह से, 0.003 से वी विल गेट 1.8 मिलियन। सो seems like D is the right answer. 33, what is the potential difference and which measuring instrument is used to measure PD? The measuring instrument used to measure the PD is going to be voltmeter, of course, and the unit will be voltage. ammeter के लिए यूनिट एम्पेयर एमीटर, और उसका जो वो होगा दैट विल बी करंट नाम। The diagram shows four circuits. Each circuit contains 100 resistors. Which circuit has the smallest total resistance? तो यार ये आपने सारे के सारे सॉल्व कर सकते हैं. You can potentially do that, but I think the more efficient way will be to consider when the like circuit is in a parallel configuration or the series configuration. Whenever, sorry, whenever there are the same amount of resistors with same resistance, the parallel configuration will always have the lower resistance. पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम रेजिस्टेंस होती है और सीरीज में सबसे ज्यादा होती है। तो सी विल बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। आई डू नॉट वांट टू गो इन द डिटेल्स, ठीक है ना, ऑफ कैलकुलेटिंग, बिकॉज इट इज इन माय ओपिनियन अ वेस्ट ऑफ टाइम। व्हेन यू कैन जस्ट रिमेंबर दैट it is a waste of time practically if you do that calculations. 35. A metal kettle is plugged into a main socket. The plug contains a suitable fuse. The kettle's cable is damaged and the fuse blows up. Why does the fuse blow up? The fuse will blow up जब bare wire connect होगी ना to the live wire. जब bare wire connect होगी to the live wire, it will create a short circuit. Why? Why will it create a short circuit? Because जो हमारा what do you call it? The earth wire है ना हमारे पास. Earth wire has extremely low resistance, and when there is a low resistance, वो सारा जो electricity है that will pass through the low resistance rather than going through the high resistance, right? And it will follow the low resistance, right? So all the electricity will go in the earth. That is what will happen. So that will create a short circuit, and A looks like the right answer. The bare wire in the cable touches the live wire. ठीक है ना? ठीक है. That means the live wire which carries the current is directly connected to the earth wire.
और जो टिपिकली ग्राउंडेड होती है फॉर सेफ्टी पर्पसेस। ये एक अनइंटेंडेड कनेक्शन है, राइट, बेसिकली। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो एंड द फ्यूज इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द ओवर करंट। ठीक है ना? इट इज बिल्ट एज अ सेफ्टी मैकेनिज्म फॉर अस। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 36। As the magnet is moved into the coil of the wire as shown, there is a small positive reading on the sensitive ammeter, which must tend to increase the size of reading, moving the opposite pole into the coil. That will just, what will it do? It will only change the direction of the EMF, right? That will not do anything else. Pulling the magnet out, that will not do anything related to increasing the size of the reading. Pushing the magnet in faster. This seems like a very interesting choice. तो अब हमने Faraday's law याद करना है, ठीक है ना? तो if you increase the magnetic influx, what will it do? It will create a larger voltage. ठीक है ना? And pushing the magnet out faster, pushing the magnet in faster, it will create a larger magnetic influx. Therefore, it will create a larger EMF. So, C is the right answer. Question 37. The diagram shows a circuit for a model power line with two transformers and a lamp at the output. What is the input voltage? इनपुट वोल्टेज हम निकाल सकते हैं, तो इसके अक्रॉस है 24 वोल्ट। अब पहले हम इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं एंड देन वी कैन फाइनली कैलकुलेट द इनपुट वोल्टेज। तो हमारे पास पहले आ जाता है, क्या फॉर्मूला है, वीपी डिवाइडेड बाय वीएस इज इक्वल टू एनपी डिवाइडेड बाय एनएस। ठीक है ना? वीपी हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी calculated divided by Vs, which will be 24, is equals to Np, which is 200. 200 divided by Ns, which is 40. This will give us an answer for the Vp. ये हो जाएगा हमारे पास 200 divided by 40, which will be 5. 5 into 24 will be 120. ठीक है ना? volts. ये हमारे पास क्या क्रॉस आ गया 120, ठीक है ना? तो इसके अक्रॉस 120 आ गया है। अब हम लगा लेते हैं एक और सेम फॉर्मूला लगाएंगे बट यूजिंग डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है ना? वीपी डिवाइड बाय वीएस इज इक्वल टू एनपी डिवाइड बाय एनएस। तो वीपी in this condition we have to find again. Vp will be calculated again. Vs will be 120 that we just calculated is equals to Np, which is 10 divided by Ns, which is 100. तो ये आ जाएगा 0.1 और 120 multiplied by 0.1 will be 12. So Vp is equals to 12. This will give us C the answer. ठीक है ना? Very easy question. Question 38. Electrical power is transmitted by cables over a long distance at a high voltage. What are the effects of using a high voltage transmission system? The effects of using a high voltage transmission system is, we can say, that whenever the voltage is very high, the power loss in cable is very low. And when the voltage is high, the voltage is high, the power loss is low, and also the current is also low. ठीक है ना? Current also becomes low. So D is the right answer. 39. The diagram shows a beam of electrons about to enter a magnetic field. The magnetic field is directed into the page. What is the direction of the deflection of the electrons as they enter the magnetic field? So these are practically free, like free marks, you can say, because you just have to remember a hand sign. You have to apply the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule क्या होगा? थंब पे आपका होगा फोर्स और थंब से परपेंडिकुलर हमारे मैग्नेटिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर हमारा होगा करंट। ठीक है ना? First of all, we have to like realize where the magnetic field is. Magnetic field is into the page. ठीक है ना? The magnetic field is into the page, and since we are what do you call it? What do you call it? Following the conventional current.
that will mean that the current will be this direction. So ultimately, what will be the answer? The answer will be if you like अपना अगर हाथ को आप सही पोजीशन करो ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा डाउन द पेज का विच इज डी ठीक है ना सही है क्वेश्चन नंबर 14 इन द गाइगर बार्सन experiment alpha particles are fired at a thin gold sheet. Most alpha particles pass right through the thin gold sheet. A few are deflected. What can be deduced from this experiment? So this is a very interesting fact that, for example, if this is a whole football stadium, right? The अगर ये हमारे पास एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम है द न्यूक्लियस विल बी द साइज ऑफ द फुटबॉल इतना आप अंदाजा लगा लें इतना छोटा है द न्यूक्लियस विल ओनली बी द साइज ऑफ द फुटबॉल in comparison to the whole football stadium which is the whole atom समझ आ गई that is how small the nucleus is so what can be deduced from the experiment the nucleus is very small the has no charge this seems like the right answer electrons surrounded by the nucleus no so the A is the answer so that is it for this video, for this paper. Thank you for watching. I hope you enjoyed. I hope you understood everything. And if you didn't, make sure to ask me in the comment section. Have a great day. Allah Hafiz.